Just a few days ago, on the 6th of December, I saw this news stating that India is set to become the largest buyer of COVID-19 vaccines with more than 1.6 billion doses. तभी मैंने सोचा कि आखिर ये वैक्सीन का हिस्ट्री क्या है और ये वैक्सीन्स बनते कैसे हैं। What's exactly the difference between vaccines and antibiotics and antivirals from the medical point of view? Okay, before jumping right into the topic, I think it's essential that we learn a little bit about immunity. We have two kinds of immunity, them being innate and adaptive or acquired immunity. As the name itself implies, innate immunity is the ability to fight pathogens inborn, while acquired or adaptive immunity, it's the development of the ability to fight pathogens. We have an active or passive mode of action for each kind of immunity. Now, coming to your question, vaccines, antibiotics, antivirals, they are all pretty different from each other in many ways. However, they all serve a common purpose in protecting us from infections. While vaccines, they train our body to fight against the pathogens, antibiotics and antivirals have a more direct approach towards attacking their pathogens. Now, coming to antibiotics, they attack against bacteria, as the name itself suggests, and they like ticking time bombs, just waiting to blow off and clear the whole mass of bacteria at once. Some of the antibiotics, actually most of the antibiotics, they have a pretty broad spectrum, which suggests that they can attack a wide variety of bacteria. And what they do is they stop the bacteria from multiplying and growing, and then they kill them. That's how antibiotics work. Now, coming to antiviral drugs, unlike antibiotics, they don't kill their target. Instead, they just stop it from its development, like they stop it from developing. And they also don't have that broad spectrum. They are usually target specific. So in conclusion, vaccines, they are more better be safe than sorry measures. They help our body build resistance against pathogens, while antibiotics and antiviral drugs, they are more hands-on and they are more specific, and they directly kill their target instead of preparing our body for anything. So basically, vaccines are like these preventive medicines. That is what is kind of, to sum it up, to sum all of these up. Yes. तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि vaccination is all about preventing the disease. Prophylaxis, the term, exactly means this, prevention of disease. And in fact, the ancient Vedic science, Ayurveda, has given prime importance to this management. In an article by R.M. Nunnal, it's explained how Ayurveda has more than 14 techniques based on this principle, which includes the likes of chemoprophylaxis, that is specific medication based on the drug used in same disease as per doctor's advice, prakriti and preventive foods for disease properness, etc. अब यहीं पे हमारे चाइनीज एंटर होते हैं. करीब 1000 AD के आसपास द चाइनीज केम अप विद अ टेक्निक नोन एज इंसफ्लेशन, जो कि आज के वैक्सीनेशन से काफ़ी सिमिलर है. सो दे कलेक्टेड स्लैब्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ माइल्ड केस ऑफ स्मॉल पॉक्स, एंड आफ्टर अलाउिंग दिस टू ड्राई दे इंसर्टेड दिस इनटू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन्स नोज. और इसी के करीब 800 साल बाद इस टेक्निक को जब इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस केम टू बी नोन एज वेरियोलेशन. A certain Edward Jenner was variolated when he was 8 years old. ये वही Edward Jenner है यार, who is known as the father of the immunization medicine. On May the 14th, 1796, using the matter from Nell's lesions, he inculcated an 8-year-old boy, James Phipps. और इसके तुरंत बाद जेम्स को माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील हुआ था, और इसके 9 days के बाद James had completely lost his appetite and was feeling cold. But immediately after that, that is, the next day, he was feeling much better. And in July 1796, Jenner inculcated the boy again, this time with matter from a fresh smallpox lesion. और आश्चर्य का बात ये था कि उस बंदे ने कोई भी डिसीज डेवलप नहीं किया था, तो जेनर ने कंक्लूड कर दिया था कि द प्रोटेक्शन वाज कंप्लीट.
It took him 2 years from then to publish a book on this. अच्छा, the Latin word for cow is vaxa and that for cowpox is vaccinia. और इसी के वजह से Jenner decided that he would call this technique as vaccination. And by the late 1800s, vaccination had rapidly spread across the Europe. पर ये वैक्सीन काम कैसे करता है? Hundreds of bacteria and viruses are present on our skin all the time. पर इनमें से जब थोड़े बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, तभी ये डिसीज का कारण बन जाते हैं. स्किन, म्यूकस एंड सिलिया ऑल वर्क एज फिजिकल बैरियर्स टू प्रिवेंट पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी इन द फर्स्ट प्लेस. और जनरली जैसे ही ये बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इमीडिएटली वाइट ब्लड सेल्स को उनके तरफ भेजता है उनके साथ फाइट करने के लिए. पर हमारे बॉडी को पता कैसे चलता है? Because the protein structure of this bacteria or virus is very different from that of our own cells. और ये white blood cells antibodies release करते हैं जो ये virus के surface को जाके stick हो जाते हैं to kill them or to disable them permanently. But not all the antibodies work against all the kinds of viruses. दरअसल यहाँ पे बात ऐसी है कि there should be a perfect key for the perfect lock. So imagine करो कि हमारे antibodies एक key क्रिएट करते हैं फॉर ए सर्टेन काइंड ऑफ अ लॉक. दिस इज हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क्स. हमारे बॉडी के पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ कीज प्रेजेंट है इन द लाइब्रेरी, पर फिर भी जब नया कोई वायरस आ जाता है देन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर राइट शेप माइट टेक अ लॉट ऑफ डेज. और इस परफेक्ट चाबी को बनाने का दरिया ही वैक्सीनेशन है, क्योंकि जैसे ही हमारा बॉडी एक तरीके के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देता है तो देर आर सम सेल्स नोन एज द मेमोरी सेल्स विच रिमेंबर. यानी जब जब ये बैक्टीरिया या वायरस वापस हमारे बॉडी को एंटर हुए, दे ट्रिगर द रेस्पॉन्स टू प्रोड्यूस द सेम काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज सो एज टू काउंटर दोज वायरसेस और बैक्टीरिया. Once the right cells are activated, they quickly divide and turn into production line, manufacturing masses of antibodies that stick to the bacteria. तो सारा खेल इन मेमोरी सेल्स का ही है ताकि बॉडी के पास पहले से ही वो कीस रेडी रहे जो उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को अटैक कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके. Because once the body creates, it remembers. पर ये वैक्सीन्स को बनाते कैसे हैं? दरअसल there are different kinds of vaccines. Some vaccines, which are known as the live vaccines, are made by taking a weakened version of the bacteria or virus responsible for the disease. And in other cases, the dead forms of these organisms are used. पर इनको ऐसा मारा जाता है ताकि वो अपने हमारे बॉडी से वो पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर कर पाए. While in some other cases, an inactivated toxin that is made by the bacteria or a piece of bacteria or virus is used. और यार वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 3 फेजेस है. फेज 1 में ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है जो काफ़ी हेल्दी होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है. दीज आर जनरली द यंग अडल्ट. और यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि ये इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं. इसके बाद फेज 2 में द वैक्सीन is then given to several hundred volunteers to further assess its safety and ability to generate an immune response. Also, a group that did not get the vaccine is usually included in the phase, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो जो इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर हुआ था वो प्योर चांस के वजह से था या वैक्सीन के एक्चुअल काम करने के वजह से था. और फिर हमारे आते हैं फेज 3 विच इज द लास्ट फेज. इस फेज में वैक्सीन को थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को दिया जाता है और एक सिमिलर ग्रुप को भी कंपेयर किया जाता है जिनको वैक्सीन मिला नहीं था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वैक्सीन इफेक्टिव है डिसीज के अगेंस्ट या नहीं. और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोविड-19 का भी वैक्सीन बनाया जा रहा है. एंड गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, on December 7th, 2020, that is a Sunday, a total of 17 volunteers from India were administered Russia's Sputnik V coronavirus vaccine at a Pune hospital as part of the human clinical trials. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया had purchased about 1.6 billion doses of COVID-19 vaccines, out of which 500 million doses of the Oxford AstraZeneca candidate were purchased, 1 billion from the US company Novavax were purchased and 100 million doses of the Sputnik V were purchased. Actually, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है in terms of producing the COVID-19 वैक्सीन. इंटरनेट ने ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को
काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। पर ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता कैसे है? एंड दैट इज एग्जैक्टली द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और हमेशा की तरह सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो? स्वयं विचार करो।